मां भी जेको घोटकी खां शुरू कयो आहे सफ़र कराची ॾे वञा पियो, हिन महिल जेकी सिंध जी सूरत हाल आहे त जंहिंमें जीअं 2 ॾींहं अॻु में कराची में रैली ते फायरिंग थिए, कल्ह गाज़ी अहमद में बस ते फायरिंग थिए, उते बि बेगुनाह असांजा वीचारा माण्हू मारिजी वञनि, हिते बि बेगुनाह असांजा मारिजी वञनि। हीअ हिकिड़ी असांखे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ठाहियो, असांखे तर्बियत सभु बराबरि मुंहुं पियो त न, पर असां जेके सम्झूं था त इन खे पाकिस्तान खे टोड़ण जी साज़िश आहे, पाकिस्तान खे कमज़ोर करण जी साज़िश आहे। लोक लिबरेशन आर्मी हुजे, महाजिर सूबा तहरीक हुजे, सिंध लिबरेशन आर्मी हुजे या तालिबान तहरीक हुजे, इहे सभु तहरीकूं तंज़ीमूं इहे सभु पाकिस्तान खे कमज़ोर करण लाइ पहिरीं पाकिस्तान खे ख़ुदकश धमाका कया विया, असांजे इदारनि ते हमला कया विया, उन खां पोइ टारगेट किलिंग थी वई। हाणे वञी जॾहिं पाकिस्तान जे अलावा असां कमज़ोर न कयो त हाणे अची इन्हनि सिंध में लिसानी फ़सादात कराए सिंध खे टोड़नि था चाहिनि, सिंध खे तबाह करणु था चाहिनि। ऐं असां सम्झूं था त इहो वक़्तु जेको आहे इहो इन शोले खे विसामण जो मौक़ो आहे, इन खे बाहि खे बचाइण जो मौक़ो आहे। ऐं असां पाणी खणी ॿाहिरि निकिता आहियूं, असांजा दोस्त सियासतदान जेके हिन वक़्तु इन शोले खे पेट्रोल था ॾेखारनि, असां हथ ॿधी गुज़ारिश था कयूं त ख़ुदा जे करे माण्हू इन में जेकॾहिं इन शोशे खे वधाइबो त इन में माण्हू ख़ुदा न ख़ास्ता किलिंग थींदियूं, मासूम माण्हू मारिजी वेंदा। इन खे सियासत चमकाइण लाइ न इस्तेमालु कयो, इन खे बिल्कुलु कंहिं तरीक़े सां बाक़ी किलर्स भली कंहिं पार्टी जा कराची रैली ते हमले करण वारा हुजनि, बस ते हमिलो करण वारा हुजनि, बैंक ते धमाका करण वारा हुजनि, केर भी जेके क्रिमिनल्स आहिनि उन्हनि खे सियासत खां बालातर थी, सियासत से बालातर होकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी इत्तेहादी के होने के नाते, किसी कॉन्फ्रेंस होने के नाते, किसी हुकूमती मेंबर होने के नाते, किसी मुस्लिम लीगी होने के नाते, किसी भी बिना पर किसी क्रिमिनल को, किसी भी मुजरिम को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और हुकूमत को हम समझते हैं कि आज वक्त है कि हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये लोग जिन्होंने महाजिर सूबे का शोशा छोड़ने वाले लोग, ये महाजिरों के भी दुश्मन है और ये बैनुल अक़वामी एजेंट, ये एजेंसीज के एजेंट हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के जिन्होंने। और इस इशू को ये कॉन्फ्रेंस बाहर जेके इन इशू के खड़ी था वजन इनके हिकिड़ी वॾी नफ़रत था खड़नि, इहे बि सिंधियत जा दुश्मन आहिनि। इहे न सम्झनि था। असां ॾिसो सराइकी सूबे जी ॻाल्हि थिए थी, सराइकी किथे आहे, उते 90% 80% सराइकी ॻाल्हाइण था, चई सघनि था, मोर देन 80% दे आर सराइकी एरिया। हज़ारे सूबे जी ॻाल्हि थी, उते बि 80 खां 90 खां वधीक हज़ारे वारा ॿिया 10-15% ॿिया था रहनि। पर कराची में हिकु ॻाल्हि छो छेड़ियो वियो आहे, उहो जेके बि इहे ॻाल्हि कनि था, जेके लिखियल धुरियूं आहिनि या जेके पधरी थियल धुरियूं आहिनि, उन्हनि खे सोचणु घुरिजे त कराची में बि हिकिड़ी क़ौम नथी रहे। कराची मल्टीलिंगुअल सिटी आहे, कराची में मुख़्तलिफ़ ज़बान ॻाल्हाइण वारा, मुख़्तलिफ़ क़ौमियत वारा सभु रहनि था। ऐं कराची में त मुमकिन ई न आहे त उनजी को अलॻि ख़ुदा न ख़ास्ता उनजी को महाजिर क़ौम जे हवाले सां या कराची जे हवाले सां को अलॻि शनाख्त थी सघे। तो हम उर्दू में कहते हैं कि वो लोग जो कराची सूबे की बात करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सिंध कभी नहीं खुदा न खास्ता टूट सकता, सिंध कभी नहीं हो सकता। और जितना जितना दर्द किसी कॉन्फ्रेंस को हो सकता है, सबसे ज़्यादा दर्द हम समझते हैं कि हम मुस्लिम लीग को होगा, इसलिए कि पाकिस्तान हमने बनाया था और सिंध से ही पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। कायदे आज़म भी सिंधी था, कायदे आज़म भी सूबे के ताल्लुक से ताल्लुक रखने वाला था। तो हम समझते हैं कि सिंध के खिलाफ साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश है। और इसको और आज का वक्त ये है कि हमें मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो बेगुनाहों की जो कत्लेआम शुरू होने वाला है, अगर इसको हमने ना रोका तो ये बहुत बड़ी आग लगेगी जो कहीं तक नहीं जाएगी। और जितने लोग ये तंजीमें जो मज़मूम मकासद, हम इसमें बिल्कुल सही कह सकते हैं कि ये जितना भी कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, अब कराची में शुरू किया है, ये एक मज़मूम साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर कर, इसलिए पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर, इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। ये उसकी कड़ियाँ हैं। हम इस वक्त करीब के चश्मे लगाना छोड़ दें, हम दूर के चश्मों से देखें कि ये हमारे खिलाफ क्या टारगेट किया जा रहा है। आज हम मुस्लिम लीग इस पैगाम को बाहर निकली है कि खुदा के लिए हम लिसानियत में एक दूसरे को देखें। ना हम उर्दू बोलने वालों को समंदर में भेज सकते हैं, ना कराची से सिंधियों को निकाला जा सकता है, ना सारे पंजाबियों को पंजाब भेजा जा सकता है, ना सारे पठानों को पेशावर भेजा जा सकता है। इवन हम तो बंगालियों और बर्मियों को भी नहीं निकाल सकते। तो फिर क्यों हम नहीं इकट्ठे रह सकते? इसके ऊपर
ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ آج اپنی سیاست، اپنی پارٹی، اپنا الیکشن، اپنا مستقبل چھوڑ کے آج یہ دیکھیں کہ اگر اس شوشہ کو اس لیے بڑھتی ہے تو کون مرے گا؟ لاشیں کہاں آئیں گی؟ لاشیں گھوٹکی آئیں گی، لاشیں سکھر جائیں گی، لاشیں عزیز آباد جائیں گی، لاشیں ناز آباد جائیں گی، لاشیں لاہور جائیں گی، لاشیں پشاور جائیں گی. کس کی ہوگی؟ سب مسلمان پاکستانیوں کی ہوگی، وہ معصوم پاکستانیوں کی ہوگی. آج ہمیں اس کے خلاف میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، ہم سیاستدانوں کو، سندھ کو تباہ کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اور ایک کھناوی سازش کے تحت کہیں پنجابی کو ٹارگٹ کراتے ہیں، کہیں مہاجر کو ٹارگٹ کراتے ہیں، کہیں پٹھان کو ٹارگٹ کراتے ہیں، کہیں لیاری کی ریلی پہ حملہ کراتے ہیں، اور اس کے سیاست چمکانے کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بھی بڑا مکروہ چہرہ اس میں سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سیاست کریں، آئیں، جلسے کریں، جلوس کریں، عوام کے مفادات کی بات کریں، لیکن آج جو ہے یہ جلتی پہ، ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جلتی پہ آگ نہ دکھائیں، شعلے کو پیٹرول نہ دکھائیں. آج بس یہ ہے کہ اگر آج جڑی سندھ میں وہ ضلع ہے، چلے بلوچستان میں تو چلے 2-3 قومیں ہیں ان کے ایشوز آ، سندھ میں تو 15 قومیں موجود ہیں. کس کو باہر نکالیں؟ اس مشن کے تحت ہم ایک محبت کا پیغام لے کے نکلے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کسی بھی شوشہ، وہ سندھی دیش کا شوشہ ہو یا مہاجر صوبے کا شوشہ ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ شوشے پاکستان کو کمزور کرنے لیے ہیں. نہ سندھی دیش بن سکتا ہے، نہ مہاجر صوبہ بن سکتا ہے. تو ایسے شوشے کیوں چھوڑے جائیں جس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا؟ باقی رائٹس سب کو ملنے چاہیے. بلوچوں کے رائٹس نہیں ملتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، انہیں رائٹس ملنے چاہیے. سندھ کے عوام سے زیادتی ہے، ان کے حقوق ملنے چاہیے. پنجاب ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، وہ ہمیں ملنے چاہیے. ہم یہ سب باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور قوم کو قتل کریں، کسی کو ماریں، کسی کو سمجھ دیں کہ باہر نکل جائے گا. ہمیں اسی زمین پہ رہتے ہوئے، اسی شہروں میں رہتے ہوئے، اسی صوبے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل نکلنا چاہتا ہے. اور آج ذمہ داری ہم پہ زیادہ آ گئی ہے، حکومت پہ زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے سینسیبلی، عقل سے اور بڑے سکون سے اس کو دیکھیں. نہیں تو اگر یہ چیز آگے بڑھی تو صحیح نہیں ہو پائے گی. دوسرا اینگل ہے، تھوڑا سا میں آپ سے ریلیف کا شیئر کرنا چاہتا ہوں. ریلیف جو ڈپارٹمنٹ آئے ہند دفعہ جی 2010 میں بود آयो، 2011 میں جی مونسون آئی، بارشوں آيوں. ہن دفعہ پریڈکشن آئے تو بود بھی ہندو ऐं بارشوں بھی. اللہ رحم کرے اساں مسلمان آहियूं، امید سائیں سٺي ہوندي आहे، موضوع تي کچھ نہ تھے، اللہ رحم تو امید سائیں आहे. پر ان کے علاوہ بھی اساں چاہیوں تھا تو تمام میڈیا بھی کردار ادا کرے. چاہے تو انہن ایشوز کے جے قدرتی آفات ईंदियूं उन्हनि खे हुकूमत मुंहुं कोन ॾेई सघंदियूं، उनखे क़ौमूं मुंहुं ॾींदियूं आहिनि. असांखे गॾिजी इन लाइ तयारु रहणु घुरिजे. असां पंहिंजी वर्किंग ते निकितल आहियूं. असां कोशिशि कयूं पिया त जीअं त 2010 में असांखे इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कयो, पर 2011 में कोन कयो. उन 46% कयो. असां चाहियूं था त उन सां एतमाद में वठूं. पाण बि असां, मां चाहियां थो हिन खां वठी वॉलंटियर्स थी जेके माण्हू उन वक़्त में ॾिसो सारी क़ौम निकिरी ईंदी आहे, पर ख़बर न हूंदी आहे. जेकॾहिं अॼु खां वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन थी कंदा, पंहिंजे वॉलंटियर्स खे शामिलु कराईंदा पंहिंजे पाण खे, सुभाणे असां उन्हनि खे रिलीफ डिपार्टमेंट बि पाण सां बाक़ाइदा हर ज़िले में असां पंहिंजे वॉलंटियर्स ठाहियूं था त चाहे सुभाणे को कमु थिए असां ठीकु आहे, इमदाद असां ॾींदासीं. लास्ट ईयर भी 45 अरब रुपया 2011 में सिंध हुकूमत ॾिना, जिन मां 28 अरब रुपया रिलीफ डिपार्टमेंट ॾिना. मां त हाणे जनवरी में आयो आहे, 28 अरब रुपया असां ॾिना. टोटल 45 बिलियन रुपीज़ असां पाण बियर कयो. त असां प्रेसिडेंट साहब जो, चीफ मिनिस्टर साहब जो ख़ुशूसी अहकामात आहिनि त जेके बोर्ड मुतासिर आहिनि, बोर्ड जे हवाले सां तव्हां को कमी न छॾियो. पर उन में रुगो असां जॾहिं पंहिंजो सभु कुझु असां हिननि हेठे कामर जे हथकरे खे ॾियाऊं. मां सम्झां त असांजे सॼे सिस्टम जी ख़राबी जी ज़िम्मेवार 3 माण्हू हूंदा आहिनि, जंहिंसां आम आदमी माण्हू जो राब्तो पवंदो आहे. असां उन्हनि खे चाहियूं था त तव्हांखे गॾु कयूं. सूबेदार, मुख़्तियार तबेदार, आवाम लाइ इहा सरकार हूंदी आहे. असां चाहियूं था उन्हनि सां गॾु सिविल सोसाइटी खे, मीडिया खे, अवाम खे उन्हनि गॾु करे असां रिलीफ जो कमु कयूं. त तव्हां जॾहिं रिलीफ जे कम में शामिलु हूंदो को एतिराज़ न हूंदो. मीडिया गॾु हूंदी, लोकल्स गॾु हूंदा, असां मोज़िन गॾु हूंदा, ॻोठाणा गॾु हूंदा, विक्टिम्स गॾु हूंदा. रिलीफ जो कमु ईमानदारी सां ऐं तरीक़े सां करे. इहो मुंहिंजो हिकिड़ो एम आहे. इन ॻाल्हि ते मां शुरू थियो आहे, इन करे तव्हां हाज़िर थिया आहियूं. क्वेश्चन मां सम्झां थो इन में पुलिस जेको आहे हुकूमत जी तरफ़ां बाक़ाइदा डायरेक्टिव्स आहिनि. मां ॿुधंदो आहियां चीफ मिनिस्टर साहिबु मुंहिंजे साम्हूं इहे ऑर्डर्स कया आहिनि त हिननि खे सख़्ती सां हिननि खे निपटियो वञे. ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी तव्हांखे चवां, जेॾीमहिल ताईं केरु पथिरो थी असांखे न चवंदो त असां ॻाल्हि था कयूं. चाहे त हिन महिल जेके सिंध असेंबली में धुरियूं वेठियूं आहिनि, ओपनली कंहिं कोन चयो आहे. पीपल पार्टी आहे, मुहाजिर सूबे जे मुख़ालिफ़. MQM आहे, उन बि उनजी हिमायत कोन कई आहे खुली करे.
असां हुनजा मुखालिफ़, फंक्शन हुनजे मुखालिफ़, DNP हुनजे मुखालिफ़, सभु मुखालिफ़ आहियूं। त अञा जंहिं हुनखे मैंडेट मिलियल आहे उन कंहिं बि सूबे जी इन हिमायत में हिमायत कोन कई आहे। बाक़ी मां सम्झां थो त इहे जेके बि धुरियूं आहिनि जिन्हनि जो मां नालो वरितो आहे, इन्हनि खे असांखे सख़्ती सां निमटणो पवंदो, हुनखे अलावा गुज़ारो पवंदो।